हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एरहेनफेस्ट थ्योरम। तो देखिए ये क्या कहती है कि डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू को डिनोट करती है कि क्या होती है। तो ये आपको थ्योरम यहाँ लिखी हुई है, इसको आज हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली एरेनफेस्ट थ्योरम टेल्स अस टाइम डिपेंडेंसी ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू, ओके, कि टाइम पे कैसे डिपेंड करती है एंड फंडामेंटल लॉज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, उसको भी ये डिनोट करती है। तो देखिए इस डेरिवेशन को प्रूव, इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कुछ अज्यूम करते हैं, जैसे लेट एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए इज स्टेट साइन के अंदर जो ले रहे हैं हम कि स्टेट एक साइन ले लिया, उसके अंदर ए ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यू ऑल नो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैन बी रिटन लाइक दिस साइन ए एंड केट साइन, ब्रा साइन केट साइन एंड ए। तो ये हो गया एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ए। नाउ डेरिवेटिव वी आर टेकिंग equation 1, we are taking the derivative of equation 1 with respect to time. So we are saying derivating with respect to time. Okay, so this will convert in d a average का derivative is equal to, लाइक यहाँ पे तीन क्वांटिटी है, एक साइन है, एक ए है, एक साइन। तो हमें बस सबसे पहले एक का डेरिवेटिव, फिर दोनों को कांस्टेंट, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। सेम टाइप से जैसे हम बेसिक 11th-12th में डेरिवेटिव करते थे, ऐसे ही करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम फर्स्ट का डेरिवेटिव कर रहे हैं पहले। तो ये हो जाएगा डेल साइन ओवर डेल टी एंड ए और साइन एज सेम प्लस साइन डेल ए ओवर डेल टी एंड साइन प्लस साइन एंड ए एंड डेल ए ओवर डेल साइन ओवर डेल टी। ओके, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। इसमें हमने क्या किया, बस डेरिवेटिव किया है, और जो मल्टीप्लिकेशन जो डेरिवेटिव होता है ना उसके रूल से। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करेंगे फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या कहती है कि एच साइन इज इक्वल टू आइटा एच क्रॉस डेल साइन ओवर डेल टी। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ बताइए आप मेरे को कि डेल साइन अपॉन डेल टी का वैल्यू कितना आ जाएगा। डेल साइन ओवर डेल टी का वैल्यू आ गया एच ओवर आइटा एच क्रॉस इंटू साइन, वेरी बेसिक। नाउ कैन यू से लाइक हमें डेल साइन ओवर डेल टी तो चाहिए, यहाँ पे भी डेल साइन ओवर डेल टी है, यहाँ पे भी डेल साइन ओवर डेल टी है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। बट यहाँ पे ब्रा साइन है, यहाँ पे केट है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे केट में अगर फाइंड करना चाहें तो क्या हो जाएगा, डेल साइन ओवर डेल टी, केट लगा देते हैं दोनों साइड, एच अपॉन आइटा एच क्रॉस एंड केट साइन। सेम टाइप से अगर हम ब्रा साइन की बात करें तो ये ब्रा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, डेल साइन ओवर डेल टी एंड ये हो जाएगा ऐसे इज इक्वल टू एच ओवर आइटा एच क्रॉस एंड साइन। ओके, तो ये हो गया इन केट फॉर्म एंड नीचे वाला हो गया इन ब्रा फॉर्म। ठीक है, तो ये दो टाइप से हमें दो इक्वेशन मिल गई। अब देखिए इस इक्वेशन को दोनों को हम वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर ए बोल देता हूँ, इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए में हम दोनों को वैल्यू पुट कर रहे हैं ब्रा और किट डेरिवेटिव की। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, डी ओवर डी टी। राइट हैंड साइड में तो यही था, ये तो सेम रहेगा। उसका डेल से और डेल टी की वैल्यू पुट करनी थी, तो ये हो जाएगा बेसिकली एच, और यहाँ पे ए ऑपरेटर सेम आ जाएगा पहले की तरह, एच ओवर आइटा एच क्रॉस एंड यहाँ पे आ जाएगा साइन प्लस सेकंड टर्म जो है, लाइक देखिए सेकंड टर्म क्या था, ये था। तो जब भी आपका साइन और साइन स्टेट सेम होता है तो हम इसको डायरेक्ट एवरेज भी लिख सकते हैं। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डेल ए ओवर डेल टी का एवरेज प्लस थर्ड टर्म में भी सेम हमें केट साइन के अंदर चेंज करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा साइन, और अब की बार देखिए एच बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पे एच यहाँ पे है ना, ब्रा के अंदर एच पहले था, ब्रा के अंदर एच पहले था, केट के अंदर एच बाद में आएगा। ठीक है, तो क्योंकि वहाँ पे बाद में डेरिवेटिव हुआ, तो ये आ जाएगा साइन ए एच अपॉन आई एच क्रॉस एंड सन। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग हियर। ये इसको हम सॉल्व कर रहे हैं इस शेप को, तो याद अगर डी अपॉन डी टी ए एम एच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ बताइए कि जहाँ पे आइटा एच क्रॉस है, यहाँ पे ब्रा साइन के अंदर है। ब्रा के अंदर जब भी कोई ऑपरेटर या फिर कुछ भी आइटा का साइन होता है तो बाहर आता है तो स्टार हो जाता है। इट मीन्स आइटा किस में चेंज हो जाएगा, माइनस आइटा में। तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो गया एच अपॉन आइटा एच बार, बट नेगेटिव होता है, एंड इनसाइड हमारा सेम रहेगा साइन एच ए एंड साइन। अच्छा, एच तो हमने आउटसाइड ले लिया, बट एच को आप रहने दीजिए, इनसाइड रहने दीजिए। हम आइटा एच क्रॉस को ही आउटसाइड लिए हैं अभी।
ये थर्ड टर्म को मैं पहले लिख देता हूँ सेम टाइप से। यहाँ पे भी, यहाँ पे जो आएगा मतलब 1/i क्रॉस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे केट साइन है। अब केट के अंदर देखिए मैं लिख देता हूँ ए साइन, जैसे ये है, ठीक है, ये जो आएगा ए स्टार बाहर आएगा लाइक दिस। जबकि जो केट के अंदर होता है, जैसे यहाँ पे ए साइन ही है मेरे पास, और इसको अगर मैं बाहर लेना चाहूँ तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, ठीक है। केट के अंदर कोई स्टार नहीं होता, कॉन्जुगेट नहीं लगता, बट ब्रा के अंदर हम कॉन्जुगेट लगाते तो यहाँ नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए एच एंड साइन प्लस डेल ए ओवर डेल टी। सेकेंड टर्म सेम रहेगा, ठीक है। अभी देखिए इस दोनों टर्म में मैं कॉमन लेना चाहूँ तो क्या आ जाएगा कॉमन, देखिए 1/i क्रॉस तो कॉमन है, और ये भी कॉमन आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं कंबाइन लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा, चलो ये मैं पहले लिख देता हूँ साइन ए एच एंड साइन माइनस साइन एच ए एंड साइन प्लस डेल ऑफ ए ऑपरेटर डेल टी का एवरेज। ओके, नाउ आप यहाँ पे देखेंगे कि साइन साइन स्टेट दोनों सेम है, तो हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर वाले को एक साथ लिख देते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/i क्रॉस इट विल बी कन्वर्टेड इन साइन, एंड इनसाइड को हम डायरेक्टली लिख देते हैं ए एच माइनस एच ए, एंड दिस इज द साइन। ओके, नाउ get sign, this is get, and this is bracket close, and del A over del T. Now you will see, right, left hand side is the same, del A average upon dt and dA average upon dt is equal to, यहाँ पे देखिए ये क्या है, मतलब ए एच माइनस एच ए, व्हाट इज दिस, दिस इज द कम्यूटेटर ब्रैकेट एक्चुअली ऑफ ए कोमा एच। ओके, सो वी कैन से दिस इज द कम्यूटेटर ब्रैकेट, सो ए कोमा एच, बट बाहर साइन और साइन स्टेट सेम हो तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, ये एवरेज वैल्यू है, नॉट द एग्जैक्ट कम्यूटेटर बट द एवरेज ऑफ दैट। ओके, सो ये हो जाएगा डेल ए ओवर डेल टी। नाउ दिस इज द इक्वेशन विच वी हैव टू प्रूव, दिस इज द एरेनफेस्ट थ्योरम। ओके, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, तो इसके कुछ केस हैं, तो उस केसेस को देख लेते हैं विथ एरेनफेस्ट थ्योरम। नाउ जैसे इसका केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट, इसमें क्या होता है, जैसे हमने ऑपरेटर जो है ए ऑपरेटर, वी आर अज्यूमिंग द ए ऑपरेटर इज हियर एक्स पोजीशन ऑपरेटर। ओके, इफ द ए इज पोजीशन देन व्हाट विल बी द एरेनफेस्ट थ्योरम। ओके, तो देखिए अगर मेरा ए ऑपरेटर पोजीशन है, इट मीन इट डजंट डिपेंड ऑन द टाइम एक्सप्लिसिटली, इट मीन्स द थर्ड टर्म विल बी 0 फॉर द पोजीशन केस। ओके, सो आई कैन से डायरेक्टली डी ए एवरेज ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/i cross and average of x and h, commutator average, our expectation you can say, plus this will be 0. So now we have to calculate only x comma h commutator bracket. So what will be that, let's see, x h is equal to, you know what is the Hamiltonian in quantum mechanics, you all know x is, and Hamiltonian is equal to p square by 2m plus potential energy is equal to Hamiltonian. So this is our Hamiltonian, and we are taking the commutator bracket with this. So 1/2m will be taken out, and x comma px plus, here is the same thing we will repeat here also, like we have done for px square by 2m. Now for v, so v, now this will be 0, and x comma px we know the iota is cross and by 2m. So basically we are putting the value in that equation. So what we are doing, what we are getting, let's see. Okay, so in the denominator part, you can see x comma h is equal to iota h cross and px divided by 2m. Okay, basically there is a px square, I think I forgot that, px square, so there should be px, because whenever we do the square term commutator, then the square term will be derivated by the position operator. Okay, so this will be px, and 2 times px आएगा, तो 2 will cancel, so it will converted in the iota px, iota h cross px by m. Okay, this is the commutator bracket of x comma h. So now I can say the d of x average over dt is equal to our iota 1/iota h cross is there,
initially, and I dash cross px by m is now. So I dash cross cancel, and we get px average divided by n, because we want average of that value finally, because there is another average sign also is one. Okay, so we can say that d of x expectation upon dt is equal to expectation of px upon m. This is our final answer for the in the case of the operator is position operator. Okay. In the second case, we are taking the second example, we can say. So in this we are saying that a operator is our momentum operator. Okay, so in that case d px average over dt is the same thing that time momentum operator doesn't depend on the time, so we can write on the first term only, and the second term again will be 0, and px as commutator plus 0. Okay, now it can be calculated by you and check if you are getting this minus I times cross and del v over del x. If you are getting this, then it's okay. Otherwise, comment me. I will solve in the next class. Okay. So this will be I'll write here and d of px over dt is equal to somehow 1 upon I dash cross is there, 1 upon I dash cross, and minus of I dash cross del v over del x. So I dash cross will be cancelled and the negative sign will be there, and the average of final value. So it will be minus of expectation del v over del x. So basically we are getting d of px over dt is equal to minus of del v over del x. So this is our final answer in the case of the operator when the operator is momentum operator. Okay, we are saying the third case, general case. So in the third case, we are assuming that if the operator is selected like that, key a as commutator is 0. When a is time independent, we can say. So this 0 and time independent also. So what we can say that by Erenfest theorem, we know d upon dt is equal to 1 upon I times cross average of a as commutator plus del a over del t, like this. If I am saying that operator is like this, key that commutator bracket is 0 with the Hamiltonian. Now, if it is 0 and we are saying that it is not depend on the time also, so it will be 0. So our d expectation a over dt will be 0 in this case. Now what we can say, if the derivative of that 0, it means the operator expectation value of operator should be constant. So a expectation should be constant. This is our answer in that case when the operator doesn't depend on the time and a commutator with that Hamiltonian will be 0. Okay, that's our 3 cases and for this Erenfest theorem.